सर आपने कोई क्वेश्चनर दिया है क्या? ये 1 to 10 के कुछ आंसर्स हाँ, ग्रुप में दिया है ना। ग्रुप में है? अच्छा। Question number 1. Which point is CMP point of the ND meridian? What is the answer? B. ND1B. So the option will be B. B, ND1B. ND1B will be the nerve degeneration point. Question number 2. What is the primary function of ND3A? B. B. Parasympathetic. Parasympathetic ganglia of the head. So the answer will be parasympathetic ganglia. It will, ये हमारे ND3A parasympathetic nervous system पर काम करता है. B. Answer will be B. Question number 3. Which ND point used for cranial nerve degeneration? B. ND4. 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 So the answer B. will be ND4. ND4 is working for cranial nerve degeneration. B. Question number 4. Which SMP point is used when there is an issue with the artery such as high blood pressure? P9. P9. P9, P9. sir, P9. So the P9 is a very special point for arteries. हमने बात किया था कि P9 artery का Yes, sir. special point है. P9. Question number 5. What is the treatment point for numbness, tingling, and the weak nerves? So A. UV27, A. 1. ND1A. D. A. 27D. तो देखिए क्या होता है कि हमने कल बात किया था कि अगर हमें नर्वस सिस्टम को ठीक करना है, we want to work on the actually first thought nerve degeneration meridian working on all the nerves. Thought number 2, इसमें भी एक पॉइंट होता है जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर काम करता है. वो कौन होता है? P9, sir. Yesterday we have talked about that. What is SMP point? SMP और डिफरेंट. हमने कहा था कि पूरे एक सिस्टम पर काम करता है. ND1A. ND1A. तो ये टिंगलिंग, नमनेस, वीकनेस का ND, स्पेशल पॉइंट है. ND1A. दैट इज ND1. ND1A. Question number 6. Which ND points should be treated for nerve degeneration in the lower extremities? ND1. ND1. ND1 से पैरों की नर्व का ट्रीटमेंट होगा. Question number 7. ND1. Which is main meridian point for the nerves of the lower extremities? UB61. UB61. 61. 61. तो हमारे पैरों की नर्व का जो पॉइंट होता है UB61. वो यूरिनरी ब्लैडर 61 होता है. दैट इज द UB61. Question number 8. Which combination treats cervical spondylosis and the upper limb nerve degeneration? D. ND1 plus UB61. ND2 and SI6. Answer will be B. ND2 SI6. working for cervical and thoracic area plus SI6. हमने इसके बारे में बात की थी. इस पे लिख लो. Question number 9. Which is the lymph support point for the spine and lumbar area? LY6. LY12. So the answer will be A. कि हमारे स्पाइन और लंबर एरिया के सपोर्ट के लिए लिम्फ 12 पॉइंट्स जो कंधे पर होता है. क्वेश्चन नंबर 10.
Which ND point used for meninges, degeneration, and central nervous membrane disorders? ND4. ND4. इसका 94. आंसर अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को अभी हम समझेंगे। ओवर ना। या तो चलिए हम बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर Sir, kindly please mute all, sir. So look at here, we are having ND1 to ND4, there are total 8 points in the nerve degeneration meridian. So we have discussed that ND1 is for lower body, ND2 is for middle body, means cervical and the thoracic area, ND3 for upper body, like head area. हमने 3 पॉइंट की बात की है. Then we know the ND1 is the CMP point and we are using it for any problem which is the problem of nerve, हमारे शरीर में होने वाली नर्व की कोई भी प्रॉब्लम. तो ND1 ये it is available, this point is we have seen here the middle joint के ठीक ऊपर है ND1V. We are using it for any problem of the nerve happening anywhere in the body. That is a CMP point. Then we have discussed there are 3 CMP points, ND1V, ND3A, ND4. One CMP point for parasympathetic nerve, like vagus nerve, and one is for cranial nerve. तो 3 CMP पॉइंट हैं, एक सारी नर्व्स का, एक वेगस नर्व का और एक cranial nerves का. So there are 3 CMP points. So one CMP point is this, and second and third CMP point is. So this is over, 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 this is over. Yesterday we have discussed about SMP. कल हमने SMP की बात की थी. हमने 2 चीजों का कंपैरिजन किया था, SMP and PSMP. SMP for one system, like whether the SMP point for artery,
SMP point for nerves, SMP point for one system, and PSMP means for whole, like PSMP point for chest cavity. Okay. Then we talked about yesterday कि जो lymph 5 होता है, कल हमने बात की थी. From here we are going lymph 5, that is the point for chest, PSMP. Whether now nerves, arteries, veins, everything, so all coming in PSMP. SMP means nerve SMP point, artery SMP point, but PSMP point means whole. So here the 1A is the SMP point. That's why we are using it for tingling, for numbness. अभी हमने जो क्विज दी थी आपको उसमें बताया था, this is a very very special and specific point for nerves and only for nerves. तो हमारे एक पॉइंट रह गया, बी ओनली वन पॉइंट लेफ्ट, ND1C. इफ यू लुक एट द फिंगर, अगर आप फिंगर में देखेंगे, so this is the upper joint, this is the middle joint, this is the lower joint. So if we talk about the middle joint, if you go above, that is a CMP point, but there is a one more point just below down, that is ND1C. हमारी इस फिंगर के ठीक नीचे एक पॉइंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ND1C. Look at my finger. So this is the middle joint. मिडिल जॉइंट के ऊपर CMP पॉइंट है, लेकिन मिडिल जॉइंट के नीचे एक पॉइंट है जिसे कहते हैं ND1C. So nerve degeneration point ND1. Then below this joint 1A, above this joint 1B, below this joint 1C. Right now we're talking about the point below this. This is the very good point for covering of the brain or the meninges. यह जो बिंदु है हमारी ब्रेन की meninges के लिए काम करता है. So this is the point for meninges. Because we are talking about the brain, we are talking about the nervous system. Meninges is the very important part of the brain. जनरली लेमैन की लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना, अरे दिमाग पे बुखार चढ़ गया. वो दिमाग पे बुखार चढ़ना मतलब मेनिंजेस का बुखार, ब्रेन फीवर, meningitis. So that is the covering of brain. So brain is enveloped in the covering. There are two very important points for meninges. हमारे शरीर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं meninges के लिए. तो जब भी किसी को फीवर चढ़ता है, when the person is having very high fever, we have to protect the brain, otherwise it will damage the brain, it will damage the meninges and person will suffer with some problem. There are two very important points. One is here, one another point that I will tell you shortly, that will be here. There are two very important points. So when any patient going to the doctor checking the fever, oh, fever is very high. How much fever? 105. Immediately they will put some medicine to protect your meninges. डॉक्टर तुरंत ही क्या करते हैं कि meninges को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दवाएं ड्रिप में डाल देते हैं, क्योंकि पता है उनको कि अगर इतना हाई फीवर हो गया तो ब्रेन की जो झिल्ली है meninges वाली वो inflamed हो जाएगी. The meninges will get inflamed and person will get meningitis and it's a very dangerous condition because फिर व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है, आलाप करने लगता है, पागल भी हो सकता है.
है ना, उसे, and the person might suffer with some brain disorders, right? So when the person is suffering with a high fever, protecting meninges is very important task. If not protecting the meninges, and the person will suffer with the meningitis and many other problem of the meninges. Are you getting my point? आपने देखा है कभी किसी को एकदम से फीवर चढ़ता है बहुत तेज, तो डॉक्टर कुछ मैनीटॉल वगैरह ऐसे छोटे ऐसे ड्रिप चढ़ाने लगते हैं, because meninges is the protective layer which is covering the brain from outside. Okay, fine. So ND1C is a very good point for that. ND1C. तो इसके साथ ही हमने एनडी के पूरे 8 पॉइंट का मतलब समझ लिया. We have understood all the problems having. So number one problem, inflammation of the brain, that is meningitis. Okay. फिर और भी प्रॉब्लम होती है जब आप पेशेंट की रिपोर्ट देखोगे. सो देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स. अब आप बोलोगे कि मेनिंजाइटिस में यूज करना है क्या? आई विल टेल यू. व्हेन द पर्सन इज हैविंग मेनी प्रॉब्लम्स लाइक हाइड्रोसेफेलस, सिर का साइज बड़ा हो जाना. आपने देखा है किसी का सिर ऐसे बड़ा हो जाता है, हाइड्रोसेफेलस. हाइड्रो मीन्स वाटर, सेफेलस मीन्स सिर. सिर में पानी का भर जाना, सिर का साइज बड़ा हो जाना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसेफेलस. तो खुद ही आप सोचिए कि अगर एक गुब्बारे में आप हवा भरोगे तो गुब्बारे में तनाव आएगा कि नहीं आएगा? If you are filling the air in the balloon, the tension will be created in the same way. If the size of the head is increasing, there is a tension on the meninges. We have to use this point for sure. हमें 100% इस point का प्रयोग करना होगा. If the person is suffering with an epileptic attack, epilepsy. What is the epilepsy? The epilepsy means epilepsy also because of the inflammation in the meninges. Inflammation of the meninges. There might be other reason also. तो हम epilepsy के patient को भी meninges का treatment देते हैं. Remember one thing, for the epileptic patient, we avoid electric stimulation because there are two nerves. So there is a excessive electric current is going from one nerve to another nerve already, resulting epileptic fits. तो epilepsy के पेशेंट को आप दूसरे माध्यम से करिए. You do acupressure, सुजोग, acupuncture, put the needle, but don't do electrostimulation. Okay. If you do the electrostimulation, the epileptic fits. Even the person is having very like a rare episode of the epilepsy, got epilepsy sometimes in the childhood, and if you do excessive electrostimulation, the epileptic attacks might arise. उसे epilepsy का अटैक आ सकता है वापस. कहते हैं ना कि एक्यूपंक्चर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, but if you do excessive electric stimulation, acupuncture is having side effect and it might create epileptic fits. Right? So don't give excessive electric stimulation. Fine. During a childhood, मैं आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं ना, जनरली जब हम पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास जाते हैं ना छोटे बच्चों को लेकर, जब उनको बहुत हाई फीवर होता है और कई बार उन बच्चों को सीजर्स आ जाते हैं, है ना. The small kids till the age of 5 years having very high fever, getting seizure or fits. Doctor telling don't worry, till the 5 years it's a common, there is no issue. After that it will automatically subside it.
So that is because of the high fever. When high fever reaching on the meninges, then the kids are getting epileptic fits or seizures. So B can stimulate this point. This is one of the great point for seizure because it will release the meningeal irritation. जो meninges का irritation है उसको ये कम कर देगा, convulsions को कम कर देगा, and especially febrile seizure को कम कर देगा. अगर किसी छोटे बच्चे को बचपन में फीवर आया, मानो कि 1.5 साल की उम्र में फीवर आया और साथ में इपिलेप्सी का उसे सीजर भी आ गया, तो डॉक्टर हम बोल देंगे कि अब इसको आगे कभी भी फीवर आए 5 साल तक सीजर की दवा एडवांस में दे देना. डॉक्टर आपको हमेशा ये इंडिकेशन देते हैं. डॉक्टर गिविंग दिस इंडिकेशन टू ऑलवेज गिव द मेडिसिन ऑफ सीजर ऑल्सो इन द चाइल्डहुड. If the person got fever with a seizure, you are getting my point? That is called febrile seizure. Yeah, febrile seizure. Yeah. So what is the febrile seizure? Febrile seizure means meningeal irritation. Our point will be nerve degeneration 1C. हमारा point कौन सा होगा? ND1C. So ND1C is very, very important point. Okay. Fine. Got it? तो चलिए ये हमने बात की. Now let's move ahead. So look at here, we have already understood ND1 is for the lower body, 2 for the middle body means cervical and thoracic area, and 3 for the upper body. We have discussed the SMP point. The pericardium line is good for all the arteries. Okay. Pericardium line is very good for all the arteries, and ND1A is good for all the nerves. They are SMP point. SMP point working on entire system. Like P9 working on arterial system and ND1 is working on nervous system. So it is written here. It's very useful for numbness, tingling, or the beak nerves. ये हमने कल समझा था SMP point. So there are chart of the SMP point. Pericardium 9 is the SMP point. ND1A is the SMP point. Then we have discussed gallbladder 20 is for sympathetic nerve. And stomach 10 is for parasympathetic nerve. I already discussed yesterday, so I'm not going again. Even I discussed this. 11B is for spinal column. If the person is suffering with the problem of cervical spine, thoracic spine, lumbar spine, we are going to use 11B because 11B is the special point for vertebral column. Remember, वर्टिबल कॉलम का एसएमपी पॉइंट होना मतलब वर्टिबल कॉलम पर स्पेशली काम करेगा कौन? UB11B. Yesterday I told you the location, UB11B. So whenever the person is having problem with the cervical spine, 11B, thoracic spine, 11B, lumbar spine, 11B, you can do the cupping, you can do the gua sha, you can do the electrostimulation on this point, you can do the needling, magnets, whatever you want, you can do it. But do not forget UB11V because it is a SMP point for vertebral column. ये हमारी vertebral column का SMP point है. Got it? Okay. Fine. तो जब भी आप आगे चल के जब हम स्पाइन की बात करेंगे ना, 2 पॉइंट तो लग ही जाएंगे. 2 points always you remember if you want to treat the spine.
One is the UB11B, that is for spine, SMP point, and lymph 12. That will do the lymphatic drainage of the spine, doing detox of the spine. So whenever you will plan the treatment of the spine, UB11V plus lymph 12. जब आगे चल के हम प्रोटोकॉल का निर्माण करेंगे तो ये 2 पॉइंट तो पहले लगा देना, फिर बोला अब बोलो क्या लगाना है. Okay, 2 points common. And why we have to put these 2 points? Because they are the SMP point, means targeted points. They are targeting the spine. Okay. So now, let's see this page once again. So ND1 for the lower body, ND2 for chest, thorax, cervical spine, middle body, ND3 for upper body, ND1B is the CMP point for nerves, ND3A also the CMP point for vagus nerve, 4 is the CMP point for cranial nerve. Okay, so these are the very important point. Now we have understood ND1C also for meninges. हमने आज इसकी भी बात कर ली, meninges और brain fever. We also have discussed this. So let's discuss 3-4 protocols. Then we'll come to the some other discussion. One person is suffering with a paralysis. So here, if the person is suffering with the paralysis, the problem in the paralysis, the main involved part is the brain. So we can see here, we are using ND3 because it is the upper body. ND3 here, ND4, these all for upper body, and ND1V. So these are the common point. And what's written here? जहां पर पैरालिसिस हुआ है उसके अपोजिट साइड में ट्रीटमेंट करना है. The person is having problem on the side, treat the opposite side. Remember one thing. If the person is having paralysis on the right side, use this point on the left side because we are targeting the brain. If the person is having problem on the right side, which brain is involved? कौन सा brain involved है? Right or left? Left. So ND point will be used on the left hand. Got it? यानी हेल्दी साइड में हम पॉइंट लगाएंगे. जिस तरफ प्रॉब्लम है उसे उस तरफ नहीं लगाएंगे, हेल्दी साइड में पॉइंट लगाएंगे. सो वी आर गोइंग टू पुट द पॉइंट ऑन द हेल्दी साइड. ओके. नाउ very important points here. Added point. Now if you look at here, yesterday we already have discussed about these 2 points. Stomach 10 is in the throat for parasympathetic.
Gallbladder 20 is for sympathetic. We will add these points. Other than that, we will add UB10 and UB11. हम इसके अलावा 2 पॉइंट और जोड़ेंगे जो है हमारे UB10 और UB11. These points are on the upper back. हम ये 2 पॉइंट्स को और जोड़ेंगे, राइट? इसकी लोकेशन कहाँ होगी? आई विल टेल यू. पहले मैं आपको 3D इमेज में दिखा देता हूँ, फिर मैं बॉडी में दिखा. So there are 2 points we have discussed, UB10 and UB11. Because when the person is having paralytic attack, we are treating the brain stem. Brain stem means here, stem of the brain. And we are also treating medulla. Actually, medulla is also here only. So we are treating the UB10. UB10 is here. If we see this depression, we can see this depression. Just from this depression, if I go 2 finger this side, 2 finger this side, that is the location of UB10. ये हमारे UB10 की location है. So UB10 will be here and UB11 will be here after the neck. So 1 point here and 1 point here. So UB10 will be, we can see this depression. From the depression, we are going 2 finger lateral or 1.3 chun lateral. We will find the UB10. ये UB10 पॉइंट. UB10 एक बहुत ही शानदार पॉइंट है, क्योंकि जब हम UB10 को स्टिमुलेट करते हैं तो यहां पर बहुत सारी मसल पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं सब ऑक्सीपिटल मसल. देयर आर मेनी मसल्स फाउंड हियर, दे आर कॉल्ड सब ऑक्सीपिटल मसल्स. ऑक्सीपिटल मींस ऑक्सीपिट के नीचे, सब ऑक्सीपिटल मसल्स. I will see why light is fluctuating. Give me 1 minute. तो देखिए, पहले मैं आपको UB10 की लोकेशन दिखा रहा हूं, फिर आपको मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बॉडी में दिखाऊंगा.
So look at here. So just first look at the location of bladder 10 here. Hairline, if suppose this is the hairline, it's the half tune up, 0.5 tune up from hairline. Okay, both the side. That is the location of bladder 10. From the center, if you see, it is 2 finger lateral or 1.3 tune lateral. तो हम 2 उंगलियों से मेजर कर सकते हैं, 1 finger and never 2 finger. Actually 2 finger is equal to 1.5 tune. तो हम थोड़ा सा 1.3 चुन के हिसाब से 2 फिंगर को रखेंगे. The finger of patient, remember, finger of patient. If the patient is a small kid, then you have to assume the finger of patients. Now, let's see other image. एक बार हम दूसरी इमेज को देखते हैं. Now look at here, this is the location of bladder 10. ये bladder 10 की लोकेशन है. And exactly if you see in the center, ये हमारा DU15 point है, DU15. Okay, now see in the body. अब हम आपको बॉडी में दिखाते हैं. The issue. Okay, look at now in this way. So now, थोड़ा सिर को नीचे कर लो. So now we can see here, we can see the depression here. So this is the depression. Actually, this depression is DU60. If you look at from the hairline, so this is the hairline. The depression is 1 tune up from the hairline. ये depression हमारा क्या हुआ? An issue? हाँ हाँ, कट करिए, समझ गया. अरे फोन कट करिए, आई अंडरस्टूड. फोन कट करिए. नॉट ओके. मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूं. अगर आपको ना सुनाई दे तो आप
बोल दीजिएगा। चलिए, अभी दिखाई दे रहा है? कैन यू सी नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Fine. So let's see now. So we can see this is the depression. The depression is called DU16. From the hairline, it's the one tune up. So this is a DU16. From the hairline, if I come half tune, that is DU15, one tune, that is DU16, this depression. So my target is from the hairline, I have to come just half tune, and from here, 1.3 tune this side, 1.3 tune this side, that is the location of urinary bladder 10. ये हमारे UB10 की लोकेशन है. If I do the acupressure here, there is a lots of good suboccipital muscle here. यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी suboccipital muscle पाई जाती है. So if I do the acupressure here like this, it will also activate this point very nicely. So this is a very good acupressure technique for brain stem. Brain stem means this part is brain stem. So this is the brain and this is the brain stem. So I will repeat from the hairline, come half tune up, then 1.3 tune this side, 1.3 tune this side. There is a location of UB11, UB10, and we have to stimulate this point for the patient suffering with paralysis. Then we are coming to the neck. The total length of the neck is 4 finger. गर्दन की जो लंबाई होती है वो 4 अंगुल होती है. Then we are reaching to this protrusion. From इस protrusion पर आ जाते हैं. थोड़ा सिर को नीचे लगाओ. We can feel the protrusion. So at the lower end of the protrusion, जब हम protrusion के एकदम lower end पर चले जाते हैं, so let me arrange. Yeah, perfect. So this is the protrusion. We can see the protrusion here and the lower end of the protrusion. From here, if I go 2 finger this side, 2 finger this side, there is the location of UB11. UB11. So UB10 is here, UB11 is here. I have to stimulate these both points. UB10 is very, very effective point. In the single point therapy, this point is very good for high heartbeat और टैकीकार्डिया. अगर किसी की हार्ट बीट बढ़ी हुई है 72 पर मिनट से ज्यादा है, मान लो किसी की हार्ट बीट 80, 90, 100, 110, the person is having excessive heartbeat, maybe 110, 120, just stimulation of this point will calm down the heartbeat. Okay, so how to stimulate this point? Another method to stimulate this point I will tell you now. So let's see this. धीरे से सीधे लेट जाओ. हाँ, यहीं पर सीधे लेट जाओ. So when the person is suffering with a paralysis, please make sure that you are stimulating this area of UB10 and UB11. So what I can do here, let's see this. I can stimulate this area by the fingertips like this. So I will keep my both of hands like this under the occiput. Then I will bend my finger up. मैं अपनी उंगलियों को नीचे रखूंगा ऐसे और पेशेंट को बोल दूंगा कि अपने सिर का वजन पूरा छोड़ दो. सिर को उठा के नहीं रखना है. Drop the head. So you can see entire head is in my fingers, on my fingers. So I will do the pressure here. थोड़ा मोड़ना है. You can see I am keeping the finger like this, where skull is ending under the occiput.
My purpose to work on the suboccipital muscle. Very, very effective technique. If someone is having excessive heartbeat or tachycardia or paralysis, and we want to work on the brain stem, we want to work on the medulla oblongata, we want to improve breathing, beating, हम heartbeat को improve करना चाहते हैं, हम lungs की breathing को improve करना चाहते हैं, just doing 3 to 4 minutes, this technique will give very effective results. Yeah. Okay. So this was the quick demonstration of 2 points, UV10 and UV11. हमने ऑस्टियोपैथी में ये पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना सिखाया था। जिन लोगों ने ऑस्टियोपैथी किया है ना, इवन एक्यूप्रेशर वाले कोर्स में भी हमने सबऑक्सीपिटल रिलीज बताया था। और सिंगल पॉइंट एक्यूप्रेशर में आप अगर UV10 लगा दो, UV10 2 मिनट के अंदर हार्ट बीट कम हो जाती है, बीपी कम हो जाता है। Within 2 minutes you will see BP will be coming down just by putting urinary bladder 10 point, because it is the point of medulla oblongata. UV10 is the point of medulla oblongata. And what is the function of medulla oblongata? Medulla oblongata कहाँ होता है? ये जो पीछे खड्डा है ना, डिप्रेशन, इसी से 2 इंच अंदर होता है। Medulla oblongata is located 2 chin inside. So when we are putting this, when we are doing this stimulation of the urinary bladder 10 points, it's stimulating the medulla oblongata, and medulla oblongata working on BB. BB means, B means breathing, B means beating. Breathing means breathing from the lungs, beating means beating from the heart. Within 2 minutes you can relax and calm down. अगर कभी किसी कोई इमरजेंसी में आपको कॉल करे, अरे कुछ बताओ मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है, पाल्पिटेशन हो रहा है और बीपी बढ़ गया है, तो आप उसको सजेस्ट कर देना कि इस पॉइंट को सेडेट कर दो। लेकिन ध्यान रखना, अगर बीपी कम है तो सेडेट मत करना, है ना, क्योंकि पाल्पिटेशन तो कई बार बीपी कम होने से भी हो सकता है। Got it? Clear? So you can try this point for you. It's a very, very effective points. Okay. Location is clear? सुजोग में भी उतना ही इफेक्टिव है जितना हाथों में। मैंने आपको बॉडी में बताया, सुजोग में तो आप सुजोग का चार्ट देख के लगा सकते हो। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट, क्योंकि सुजोग में भी अगर आप देखेंगे, एज पर द सुजोग, दिस द हेड, दिस द नेक, सो UV10 विल बी एट द एंड ऑफ हेड, एंड ऑफ हेड, हेड की समाप्ति पर, यहां पर। यहां पर कहीं होता है ना, जो लोग सुजोग प्रैक्टिस करते हुए जानते होंगे, ये पर है। और UV11 गर्दन, गर्दन की समाप्ति पर। जो लोग सुजोग प्रैक्टिशनर हैं वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। सर नमस्ते सर। सर ये हाँ। दोनों अलग अलग साइड है, 11 इधर है और 10 उधर है? 10 ऊपर है गर्दन के, 11 गर्दन के नहीं, नीचे। कॉरेस्पोंडेंट जैसे अब ब्योल पे बताया सर आपने। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने दोनों तरफ एक, हाँ, ओके सर, दोनों तरफ होता है वो साइड। लेकिन आप देखोगे ब्यूल चार्ट में एक तरफ दिया रहता है, ये दोनों तरफ होता है, बिकॉज UV मेरिडियन इज वन ब्रांच गोइंग फ्रॉम हियर, वन ब्रांच गोइंग बायलेटरल। ओके ओके, राइट सर। बट सर ओरिजिनल पे गॉल ब्लैडर 20 की लोकेशन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है उसमें कि 10 और 20 जो है। 20 की, यस सर, GB 20 20 की एंड लोकेशन UB में, 10। 20 की लोकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। फोर, कीप द 4 फिंगर, आप जो कान है ना, कान पर ठीक 4 अंगुल रख दो अपने खुद के, ऐसे। See where the 4th finger is reaching the depression, that is the gallbladder 20. ओके ओके, राइट सर, But थैंक यू सर। because of this is the gallbladder 20, this is the gallbladder 20. Now regarding the UB10, from this depression, this is the depression governing vessel 16. So we have to come half tune down. Now from here we go 1.3 tune, that is the bladder 10.
अलग अलग है लोकेशन। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, we Then- have to sedate then- bladder for reducing BP or Yeah, for reducing the BP palpitation, we have to sedate. Quickly, and we'll if it see the toni- effect. is it we tonify this point, we can tonify the BP? No, Means for for low BP. Sir, your voice is not coming. Stop. Sir is freezed. Yes. It came, his internet was low But before. please, some internet problem. Recording stopped. Recording in progress. so there is a fluctuation in the internet. So for every purpose we have different points, right? हर पर्पज के लिए डिफरेंट पॉइंट होता है। ये पॉइंट बहुत इफेक्टिव है सिंगल पॉइंट थेरेपी में। अगर आप इसको सेडेट भी ना करें, आप इस पर अगर एक मेथी का दाना भी लगा दें तो भी ये बीपी को रिलैक्स कर देता है। इतना इफेक्टिव पॉइंट है। जस्ट यू पुट द मेथी सीड्स एंड इट विल वर्क ऑन द ब्लड प्रेशर, इट विल वर्क ऑन द हार्ट बीट। एनीवन हैज यूज्ड UB10 फॉर दिस पर्पज? UB10, yeah, good. Yeah. So now, so this protocol is over and we have discussed very nicely. So I'm going back here once again. So for the patient suffering with a paralysis treatment, you have to use these points with these combinations. Okay. These all points are working centrally. They're the very important point. लेकिन इसके साथ हमें एक चेन सिस्टम भी अप्लाई करना होता है। We have to apply the chain system. What is the chain system? The person is suffering with the paralysis in the right arm. Okay, this is point. Okay, this will work on the brain, on the deeper part of the brain, or the deeper part of the nervous system and all. लेकिन किसी को हाथों की पैरालिसिस है तो हम एलआई मेरिडियन के पॉइंट ले लेंगे चेन में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आगे आएगा। जैसे LI4, LI11, LI15, ओके, ये SI9, SI3, ऐसे दो तीन पॉइंट हम ले लेंगे इस मेरिडियन के। वी विल टेक 2-3 पॉइंट्स ऑन दैट मेरिडियन बिकॉज बी आल्सो हैज टू work on the local area if the person is having paralysis. Got it? And so central system treatment plus local treatment. Okay. After that, the next system, next condition is cervical spondylosis, which we already have discussed. हम cervical spondylosis की बात already कर चुके हैं, है ना?
We already have discussed the nerve degeneration 2 and the SI6 are the very good point for, because nerve degeneration 2 for middle part of the body for cervical. So LU7, LU8, 1 point for artery, 1 point for vein. Then lymphatic drainage point for the arm, SI7, SI9. किसी ने इस प्रोटोकॉल को अप्लाई किया कि अगले पिछले 2 दिनों में? Anyone has applied this protocol last 2 days? Anyone? No, please apply this protocol. Very effective for cervical spondylosis, for numbness, tingling of the arm, for heaviness of the arm, for हाथों में जो कमजोरी आ जाना, थकान आ जाना, अप्लाई करके फीडबैक शेयर करिए. It's a very effective product. I have applied for many patients. कल करोगे अप्लाई? ठीक है, very good. Then the third protocol we have discussed already, that is a very effective protocol for the sciatica pain for the lower extremities. इसको तो आपने कई लोगों ने already apply किया. ND1 for the lower body, 60-61. And these all points you already have applied. Very, very effective points, right? ये कितने लोगों ने अप्लाई किया अभी तक? लोअर एक्सट्रीमिटीज का किया ना? Okay, you already shared results. It's a very effective. Fine. Now we are moving to the protocol number next. I'm skipping one protocol, then jumping to the another protocol. Now I will tell you the very, very effective treatment for now. Let's see this. We'll discuss something different. अब हम और भी कुछ प्रोटोकॉल बनाएंगे, लेकिन उसको बनाने के लिए हमें थोड़ी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए. If we look at this body, we are doing classification of the vein. अब हम vein का classification कर रहे हैं, because sometimes the people are suffering with the problem of the vein, like varicose vein, or some problem of the vein. Sometimes people are suffering with the problem of artery. Sometimes people are suffering with the problem of the muscles. Different people are suffering with the different problems. So let's try to understand the veins. If anyone is having any problem of the vein, अगर vein की कोई भी problem है यहाँ, means abdomen, we can divide the abdomen in 2 parts, upper abdomen and the lower abdomen. Divide the abdomen in 2 parts, upper abdomen and lower abdomen. Lower abdomen also we can consider as a pelvis or genital area. हम लोअर एब्डोमेन को पेल्विस या जेनिटल एरिया भी कह सकते हैं. And third is the leg, entire leg area, entire lower extremities. If there is any vein problem, venous problem in the abdomen, use stomach 33. If any venous problem, vein problem in the pelvis area, in the genital area, in the lower abdomen area, spleen 10, pancreas 10. If there is any problem in the legs, like varicose veins and other problem, use liver 7. ये 3 पॉइंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, स्टमक 33, स्प्लीन 10 एंड लिवर 7. लेट्स सी हियर. तो चलिए पहले हम एक ह्यूमन की इमेज बनाते हैं. So we are dividing the abdomen into parts.
here we are having liver, gallbladder, here we have stomach, spleen, and we are having lots of organs. These all abdominal organs are sending the blood to the liver. ये अपना blood liver को भेजते हैं. The liver is sending blood to the heart. Remember. है ना, सुना होगा आपने पोर्टल सिस्टम सुना है? If the person is suffering with the problem of the liver, it will also badly affect the stomach. If the person is suffering with the problem of the stomach, it will also affect badly liver, because they are having blood exchange, venous exchange. Okay, venous blood exchange. तो हमारे स्टमक का और हमारे पेट का, अपर एब्डोमेन का जो ब्लड है, वो डायरेक्ट हार्ट को नहीं जाता, वो लिवर से होके जाता है. So if we want to balance the upper abdomen, हम घर में अच्छी चीजें लाते हैं, लेकिन जब चीजों को यूज कर लिया जाता है तो उन्हें बाहर फेंकना भी जरूरी होता है. Okay, we have to throw the things after use. So upper abdomen we can balance with the stomach 33 points. Lower abdomen balance with the pancreas 10 or the spleen 10. Lower abdomen और the pelvic area की venous supply गड़बड़ हो जाए तो genital problems, male female sexual problems ये होने लगती हैं, राइट. लिवर सिरोसिस तो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ऑर्गन डिजेनरेशन में आएगा ना लिवर सिरोसिस. लिवर सिरोसिस इज द वेरी different unique condition which we discuss in the organ degeneration meridian protocol. Okay. So whenever you are making any protocol for the pelvis, use spleen 10 also. Okay. अब आप वेरिकोज वेन का प्रयोग करेंगे. वेरिकोज वेन के लिए लिवर 7 का यूज कर सकते हैं ना. Now it's clear. We can use the liver 7 for varicose vein. Why we can use the liver 7? Because liver 7 is the point for veins of the leg. So let's see quickly here. So now look at in this image. From the ankle joint, if we go 3 chun, spleen 6, again 3 chun, that is spleen 7. अगर हम एंकल जॉइंट से 3 चुन ऊपर जाते हैं तो हमें स्प्लीन 6 मिलता है, और फिर से 3 चुन ऊपर जाते हैं तो हमें स्प्लीन 7 मिलता है. द स्प्लीन 7, sorry, we are not discussing spleen 7, we are discussing spleen 7 will come in another protocol. We are discussing spleen 10. हम spleen 10 की बात कर रहे हैं. तो चलिए spleen 10 को मैं आपको बता देता हूँ. Spleen 10 is a very effective points. TCM के अनुसार स्प्लीन 10 का प्रयोग हम ब्लड की सफाई करने के लिए करते हैं. We are doing the purification of the blood using spleen 10. Okay, हम spleen 10 की मदद से यूज करेंगे. So look at here. First I am showing here. You can try to understand here. So we can see. अभी ऐसे समझिए, नहीं समझ में आएगा तो मैं मॉडल में शो कर दूंगा. ओके चलिए गया. So we can see the knee here. हम यहाँ पर घुटना देख सकते हैं.
And we can also see the muscle here. We can see this muscle, see. This is the muscle, the medial side muscle. Actually, this muscle is called vastus medialis. Okay, चलिए इसको भूल जाइए. Just from the inner corner of the knee, if we go 2 chin above, this is the location of spleen 10. ये हमारे spleen 10 की लोकेशन है. This is the location of spleen 10. From the upper corner of the knee, ये हमारी knee का upper corner. If I'm going 2 chin up, that is the location of spleen 10. In the right leg, it is called pancreas 10. In the left leg, it is called spleen 10. If I put the needle here, if I stimulate this point, it will do the cleansing of this area, pelvic area or the lower abdomen. So do not forget this point. If you are treating the lower abdomen, अगर आप lower abdomen को treat कर रहे हैं, इस point को मत भूलिए. Got it? Location is clear. I will show you once again in the other image. Let's see this point here. From the knee, we are going 2 chin up. This is the location of this point on the, that is vastus medialis muscle. यहां देखिए. So look at here. This is the spleen 10 point. ये हमारा spleen 10 point है. Got it? Then stomach 33. Stomach 33 is the point also on the lateral side of the knee. देखिए दोनों point आसपास हैं. ये stomach 33 point है. Okay. So from the knee, this is the knee joint, this is the knee bone. If we got 2 chun this side, that is the spleen 10. If we go 3 chun this side, that is the stomach 33. This point will work on the lower abdomen, and this point will work on the upper abdomen. यही कारण है कि ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल होती है ना, दिस इज द क्वाड्रिसेप्स मसल, ये हमारे एब्डोमेन को बड़ा प्रभावित करती है. दिस क्वाड्रिसेप्स मसल इज हैविंग वेरी डीपर कनेक्शन विद द एब्डोमेन. इस क्वाड्रिसेप्स मसल के बाहर की ओर जा रहे हैं तो वो अपर एब्डोमेन को ठीक कर रही है, और अंदर की ओर जा रहे हैं तो वो लोअर एब्डोमेन को ठीक कर रही है. If the person is suffering with some abdominal problem, sometimes we put both the points. Because if we talk about the large intestine going in from both abdomen, lower abdomen and the upper abdomen. Small intestine also crossing both abdomen, upper abdomen and the lower abdomen. तो स्टमक मेरिडियन को हम इस तरह से क्वाड्रिसेप्स मसल नी के इधर से भी जाते हैं, नी के इधर से भी जाते हैं. Spleen 10 and stomach 33. So we'll work on the upper abdomen and the lower abdomen, and the one point is liver 7. Let's see that point also. हम liver 7 की लोकेशन भी एक बार देख लेते हैं.
चलिए पहले मैं आपको लिवर 7 की लोकेशन अपने पैर में दिखा देता हूँ। Liver 7 is a very good point for veins of the leg. So we can feel this is the bony part. We can palpate the bony part and keep coming upward. हम ऊपर की ओर आते हैं. When this bony part is ending, ये bony part is ending. Now there is no margin. So we are palpating the margin. हम margin को palpate करते ऊपर आ रहे हैं और यहाँ पर ये margin खत्म हो गया. So that is a spleen 9. ये spleen 9 है. इसी के थोड़ा सा पीछे लंग 7 है. अगर ये स्प्लीन 9 है, इसी से थोड़ा पीछे लंग 7, मे बी 1.5 chun back. That is, sorry, liver 7. So spleen 9 and the liver 7 are point here. On the border of bone, we have spleen 9, but if you go little backside, that is the liver 7. Liver 7 is a very good point for veins of the leg. Varicose veins, any problem of the vein, we can use liver 7. Let's see in the image. एक बार आप image में देखिए. So on the border of bone here we are having spleen 9. If we are going little backside and up, that is the location of liver 7. Liver 7 is the point of our veins of leg. तो हमने 3 पॉइंट की बात की, spleen 10 और the pancreas 10, stomach 33 and liver 7. So now onwards, if we are targeting the vein, अगर हम vein को target करेंगे तो हम इन 3 पॉइंट्स को जरूर लगाएंगे. Now I'm giving you one homework and that thing will be discussed in the next class. So let's see this homework. So the person is suffering with any type of the genital problem. किसी भी प्रकार की जब genital problem होती है, as per the Dr. Boone, there are 4 points. There are 4 points for any genital problem, whether the sexual health or polycystic ovarian disease or syndrome or prostate enlargement, erectile dysfunction, or any problem which is having connection with the genital part. There are 4 points. Stomach 31, spleen 11, liver 11 and pancreas 7. ये 4 पॉइंट को अगर हम सिर्फ एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी अगर हम स्टिमुलेट करते हैं, they are going to improve the genital health. So what is the homework? Homework is this. In the next class, you have to tell me the location of these points. आपको इसकी लोकेशन पढ़ के आना है. Then I will ask you. Then I will also discuss with you. So in this protocol, we have 11, 11, 31, and 7 number point. Okay. Spleen 11, liver 11, stomach 31, and pancreas 11. जनरली मैंने क्या किया कि मैंने कुछ पेशेंट्स को कुछ आसन समझाए और आसनों में क्या किया, मैंने उनको बोला कि हाथ को ऐसे रखो और ये आसन करो, हाथ को ऐसे रखो, ये आसन करो, और मैंने उसके माध्यम से जब इन पॉइंट्स को एक्यूप्रेशर करवाया, उनको बड़े अच्छे फायदे मिले. They got very good benefits just by stimulating this point with a combination of keeping the hand on the points and doing some pose, some asanas. Purpose to stimulate these points. So these 4 points are very good for genital health, any type of the genital health.
So now from today onwards, if you find anyone suffering with the genital health, stimulate these 4 points, share a feedback. And homework is this, you have to tell me the location of these points. You can tell the location of these points in the group also, or those are enrolled participants. We will discuss in the next class, because now our 8 classes are over. So now next class onwards, class will be only for enrolled participants. Okay. So then, now if you have any questions, you can unmute yourself and you can ask the questions. Yeah. Sir, Mhm. sir, this is Vinesh from Nellore, sir. Yeah, yeah. Sir, regarding myself, sir, after meals, my heart beats are increasing, sir. Regarding? After meals, my heartbeats are increasing. Okay, okay. After meal, if you're okay, okay, got it. If after meal your heartbeat is increasing, Yes, so sir. give me 1 minute. I'm changing the enter. Give me 1. I'm audible? Yes, sir. Okay. Recording stopped. Recording in progress. If the person is suffering with a spleen deficiency and having the meal, after the meal, there is a formation of lots of gas, bloating, and might suffer with the excessive heartbeat. This is the question number 1. I will repeat. Spleen deficiency, when you're eating the food, okay, it will create lots of abdominal distension, bloating, gas, and it will increase the palpitation. So there might be, this is the cause number 1. The cause number 2, there might be stomach heat also. Stomach heat भी हो सकती है, और भी कई कारण हो सकते हैं. Okay, there might be more causes also. The 2 are very very common causes. अगर कई बार खाना खाते समय अगर नाक पर पसीना आता है, the person is having sweating on the nose while eating the food, that is stomach heat. Okay. If you are having bloating feeling after the meal, you are feeling tightness in the abdomen after the meal, that is a spleen deficiency. तो आपको पता करना होगा what is exactly is there, क्या स्टमक ओवरलोड है. स्टमक ओवरलोड का मतलब ये नहीं है कि आप खाना ज्यादा खाते हैं. स्टमक ओवरलोड का मतलब है कि आप जितना भी खाते हैं लेकिन बॉडी क्या उससे ओवरलोड तो नहीं हो रही है. दिस माइट बी द कॉज. तो इसके लिए तो हम क्या करेंगे, हम डॉक्टर बोल में हम इसका ट्रीटमेंट सीखेंगे. हम कुछ एलर्जी मेरिडियंस वगैरह का यूज करेंगे विद सम स्टमक पॉइंट्स. लेकिन अभी आपको हाल फिलहाल ट्रीटमेंट करना हो तो यूट्यूब पर मेरा एक वीडियो है 10 निडल स्टमक फॉर्मूला, आप उसका प्रयोग करिए जब तक हमने उसके डिस्कशन नहीं किया है. वॉमिट आफ्टर मील, if the person is having vomiting after meal, it's stomach heat. Because of the excessive heat, person is vomiting. So vomiting after the meal, mainly stomach heat. लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ नौशिया हो रहा है, और भी कारण हो सकते हैं. As per the TCM, for each and everything having too much explanation as per the TCM, as per the acupuncture. Stomach is under the stress, and as soon as the person is eating the meal, having vomiting feeling. Emotional stress is there, तो लिवर का भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें ना. क्या सुमिति जी, question should be related with the topic. Sir, I have a question.
in this, whatever you have told, ND meridian and some meridians of the TCM, can we combine doc and Dr. Ballpoint? Can we combine that? Some Yeah, points of the job? even Dr. Bol also did combination. So Dr. Bol also using regular meridian. Dr. Bol has given 9 extra meridian, but Dr. Bol also using a regular meridian also. You can do combination. Yes, definitely. Okay. So And we are doing job we are doing combination. I told UB10, UB11. They are the point of regular meridian, and with that also we are treating the ND point, nerve degeneration point. So we also doing combination. No, sir. My question is, for example, UB10, if I don't use by the regular meridian, I take it in doc. And ND, if I take it in the Dr. Bolt's meridian pathway, is that okay? No, Dr. Bol already told that you should, because Dr. Bol also has taken the regular point. He has given 9 extra meridian for increasing the more effectiveness. Correct. But what point I am telling you, these points written by Dr. Bol only. Yeah. But can I take UB10 from this jock? I already told you can take all the point of the sujo. Okay. Okay. Thank you very much, sir. Yes, Bandha ji. नमस्ते सर। नमस्ते बंदा। अभी जैसा आपने बताया सर, ये SP9 यदि पेन कर रहा है तो SP9 pain कर सकता है. It's a very common, because if the person is having little bit stress also, SP9 might be painful, because SP9, when you press the SP9, it also will relax your heart. It will also calm down the heart. SP9 is having many indications. अगर किसी को शोल्डर पेन है तो भी काम करेगा, एक्सेसिव एसिड बन रहा है तो भी काम करेगा, कार्डियक स्ट्रेस है तो भी काम करेगा. SP9 is one of the very effective points. It is very good for kidney. It's very good for unwanted swelling, urination, dampness. SP9 is the point who having very vast range. Maybe you are having some issue somewhere, so it is paining. तो इसको ट्रीट करने के लिए इवन मेथड करूं मैं या इवन मेथड कर लीजिए इसको ट्रीट करने के. ओके। अगर इसका मेन इंडिकेशन है कि जब आप SP9 को ट्रीट करते हैं, ये डैम्पनेस को निकाल देता है, शरीर की गंदगी को, टर्बिडिटी को, डैम्पनेस को निकालता है. इट्स गुड फॉर क्लींजिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इट्स अ वेरी गुड किडनी डिटॉक्स पॉइंट, स्प्लीन 9. ओके। तो जनरली डॉक्टर बोल्स का अपन सेडेट करते हैं ना सर पॉइंट को? मैंने कब बोला ऐसा? जनरल मैंने पेनिंग है तो नो, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस. डॉक्टर बोल ने कहीं नहीं किया लिखा कि हम सेडेट करते हैं. ये तो हम लोग समझने के लिए कर देते हैं कि चलो एक्सेसिव कंडीशन है तो सेडेट कर दो, है ना. डॉक्टर बोल तो स्टिमुलेट किया. डॉक्टर बोल ने ऐसा कुछ नहीं. ओनली स्टिमुलेटिंग दैट पॉइंट. Stimulate the point, and if you have clear idea that it is an acute condition, you can set it. Okay. If you have clear idea this is a very weak condition, बहुत ही कमजोर वाली condition, you can tonify. Then tone. Okay. Okay sir, thank you. Yes, ज्योतिका जी. हाँ सर, जब पॉइंट्स का एग्जैक्ट लोकेशन हम कर रहे होते हैं तो जैसे कहते हैं 2 fingers फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट लाइक GV16 से 2 fingers, तो फर्स्ट फिंगर इज ऑन दैट रेफरेंस पॉइंट. हाँ बिल्कुल, वो फिंगर वहां से स्टार्ट होती है जो रेफरेंस पॉइंट एकदम सेंटर से. सो वी आर टेलिंग इट इज 2 finger फ्रॉम द मिड लाइन. ओके, मिड लाइन. तो मिड लाइन एक आप इमेजिनरी मिड लाइन क्रिएट कर लीजिए, और वहां से आप, जैसे हम कोई भी अपनी कॉपी पर भी ड्राइंग करते हैं, एक लाइन बनाई, फिर एक फिंगर बना के दूसरी लाइन बना दी, फिंगर बना के तीसरी लाइन बना दी, ऐसे इसको भी ड्रॉ करना है कि एक वी हैव टू इमेजिन द सेंटर लाइन एंड 2 finger, और देन आई टोल्ड 2 finger मींस 1.5 chun. So we have to go 1.3 chun only, right? So as per that assumptions, then we have to go 1.3 chun lateral. और सर जो ND1 पॉइंट रहता है वो सर हम अगर किसी का ये वाला पोर्शन लंबा है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? नेल बेस है या जो हम नकल से एकदम कॉर्नर पर, यानी हाँ वर्टिकल कॉर्नर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉर्नर के जंक्शन पर. हाँ, जो ये जो मोटा सा है इसका जो डिप आता है वो एग्जैक्ट पॉइंट. हाँ, लेकिन नाखून के पास. हाँ, अगर किसी का ये लंबा है सर तो ये नाखून और इसमें थोड़ा गैप होता है.
नाखून में गैप। हाँ, तो नेल नाखून। का ये पॉइंट हाँ, और ये जैसे मेरे देखें अगर तो मेरा सर दिख रहा है सर। एक मिनट मैं आपको पिक करता हूँ। हाँ बताइए। हाँ, तो कौन सा? सर ये मेरे लिए ये डिप तो यहीं आ गया और नेल का कॉर्नर ये है। तो वो ऊपर वाला पॉइंट हुआ ना। हाँ तो नेल वाला लेना है हमको, हाँ, मतलब नेल इट्स नॉट। कॉर्नर। हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेल कॉर्नर। नेल कॉर्नर पे लगे, ठीक है सर, बस ये। हाँ, हाँ यस यस उमा गुप्ता जी। सर अगर किसी को इनग्वाइनल हर्निया होता है तो ये SP10 हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जो हर्निया जो कंडीशंस है ना, हर्निया क्या होता है? हर्निया क्या बेन्स की प्रॉब्लम? हाँ वो इकट्ठा हो रहा है, मतलब वो पेल्विक एरिया में। नो नो, हर्निया क्या होता है? इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है? सम स्ट्रक्चर्स ऑफ द लोअर एब्डोमेन, इट माइट बी इंटेस्टाइन, इट माइट बी सम अदर स्ट्रक्चर गोइंग फ्रॉम द गोइंग इन द इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल में चले जाते हैं। वो वेन्स थोड़ी होती है अकेली, वो तो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा ठीक है। आप उस प्रोटोकॉल में ये यू डेफिनेटली यू हैव टू टेक द दिस पॉइंट आल्सो, spleen बेटा। 10 or the pancreas 10, but हम्म। guanal hernia means multi the entire structure is going down, पूरा का पूरा। अच्छा जैसे जो हम जब एक्यूपंक्चर की बात करते हैं, TCM की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं हर्निएशन मींस स्प्लीन ची डेफिशिएंसी, वी हैव टू लिफ्ट द स्ट्रक्चर अप। अच्छा। डॉक्टर बोल इफ यू टॉक अबाउट, तो हम डेफिनेटली इसमें भी देखो स्प्लीन तो आ ही रहा है, स्प्लीन आ रहा जी। है, हम्म। लेकिन हमें और भी पॉइंट ऐड करना पड़ेंगे, बिकॉज हम केवल बेन को ट्रीट करके हर्निया को ठीक नहीं कर सकते, अच्छा ठीक है। है ना। वी हैव टू लिफ्ट द ची अप, जो ऊपर ऊर्जा को हो पकड़ के रखती है, वी हैव टू लिफ्टिंग द ची। हम्म, ठीक है। यस प्रीति ठीक। जी, प्रीति जी का क्वेश्चन हो गया। Yes, sir. My BP usually it comes like 173/80. स्पीकिंग, Like not usually, like when it is high. So in the lower, it is coming low, कौन and बोल रहा the है? upper side it's very high, like more all the time, mostly. प्रीति जी आपने क्वेश्चन पूछ लिया ना अपना पहले ही। नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है बीपी नहीं नहीं, का। आपको फिर लास्ट में मौका मिलेगा, लेट लेट अदर आस्क। ओके, आरती अनीता जी ने क्वेश्चन पूछ लिया। अनीता जी। हाँ जी, हाँ नमस्कार सर। हाँ, सर ये अगर किसी को पैरालिसिस बहुत पुराना हो, 8 साल हो गए हो, तो दिस पॉइंट आर स्टोन और सीडेड? अगर पैरालिसिस बहुत पुराना हो जाता है तो जैसे पैरालिसिस में वही बात है कि टॉन सेडेड जो क्वेश्चन होता है ना, वो जी। अपने अपने यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि टॉन करना है कि सेडेट करना है। एक्यूट कंडीशन में हम सेडेट करते हैं, वी सेडेट इन द एक्यूट कंडीशन, बट इफ द कंडीशन इज वेरी क्रॉनिक, then it become very degenerative, very weak and very chronic condition. Then if we feel this condition is very weak, then we might have to turn it back, but if you are confused then go with the even method. इसमें और भी अभी सिद्धांत आएंगे कि वो मसल स्पास्टिसिटी में है कि फ्लैसिड है, और भी कई सारी चीजें आएंगी। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, एक्यूट में नई प्रॉब्लम में नई बीमारी में हम सेडेट करते हैं, लेकिन पुरानी में हम टॉन करते हैं। ठीक है। ओके सर, ठीक सर, थैंक यू सर। यस सैमसंग जी। Hello, sir. हाँ जी। I'm Padma Krishnan, actually. So, ओके, what I wanted to ask regarding the question which he continued of the stomach after meals, I wanted to clarify that always in the afternoon, after meals, एकदम गहरी नींद आती है, इतनी नींद आती है मतलब आई कैन नॉट कंट्रोल। अगर सेम रात को जब मैं खाती हूँ तो आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल, ये सिर्फ दोपहर को होता है ऐसे। खाना खाने के बाद आपको जितनी नींद ज्यादा आती है, आप उतने ज्यादा आपके शरीर में डैम्पनेस है। If ओके। the person is having very the sleepy feeling after the meal, because if you see the small kids, even after meal they are jumping, they are playing, they are going here and there, but as we grow with the age, after meal we are feeling sleepy, because with the lifestyle, with our whatever we are following the lifestyle, we are having lots of collection of dampness.
more the dampness, you will feel more sleepy. So you have to do the cleansing of the dampness. आपको अपने dampness की सफाई करनी पड़ेगी. You have to do the cleansing of the dampness. Then you will feel lack of sleep. That's why it's a very good to do the fasting or put the point of the dampness like spleen 9, and there are many other point. Then you will feel better. It's not the good. It's not good. As per the Ayurveda also, after a meal also you should feel very alert. If you are not feeling alert, means you are not healthy. Okay. So please make sure. Thank you. Thank you. Yes. हेलो Hello. सर, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ये दोनों हाथ में नमनेस है तो क्या हम ट्रीटमेंट जो करेंगे वो दोनों हाथों में करेंगे? वो जो आपका जो प्रोटोकॉल है वो हाँ दोनों हाँ, साइड दोनों बायलेटरल हाथों में करेंगे, दोनों हाथों में करेंगे, बायलेटरल. बायलेटरल So because nerve compression हुए, nerve compression is affecting both the arm, definitely will work both the sides. Bilateral. अच्छा सर, So we have two options. Option number one, we can work bilateral. Option yes, number two, we can work on the side which is having more problem. Suppose the person is having numbness in both arm, but maybe right side is having more numbness, more problem. You can start with the right side. Sometimes we are starting on one side and we are getting result on the both side. Even I have seen about the pain. One person is having pain on this arm and that arm, both arm, but the right arm is having more pain, or the right shoulder is having more pain. We are applying the point on the right side, only one side, and we see effect on both the sides. Sometimes it might happen. But if the patient is not getting relief both the side, then you can apply on the both side. ओके ओके सर, कल क्लास होगी क्या? मैं अभी बताता हूँ ग्रुप में. I have to see my schedule. Okay, I will tell. Okay, Malti ji, yes. So sir, twitching of the right eye. So that is like the upper body. So should we use ND1A point? Yeah, definitely. Twitching of the right eye we'll discuss in the facial paralysis protocol, because if the person is having excessive bend in the face region, what is the region? Excessive bend on the face. तो क्या उसके लक्षण होंगे? Twitching of the eyes, flickering of the eyes, numbness on the face, deviated tongue is going one side, or facial paralysis. These all are this. But 15-year-old boy? Anyone. It's just started 1 year back and still it is not going. That means. Yeah. So twitching of the eye is because if I'm telling you 5 symptoms. Right. Never think that the person is having twitching of the eyes will go till the facial paralysis. Maybe one person having entire life only twitching of the eyes. Maybe one person having always numbness. But the twitching of the eyes is because of the excessive bend on the. And it is curable? Meridian going on the face. So you have to expel the wind from the face. One more thing I will tell you कि इसका उदाहरण हम देते हैं, बल्कि एक जो गिलास होता है, गिलास में जो पानी होता है ना, अगर आप उसमें से आधा गिलास खाली कर दो तो आधे गिलास में क्या बचा? Air. In the same way, when we are having lots of blood in the human body, we are having lots of fluid yin, when due to some weakness or some poor nourishment or maybe irregular food habits, and many kids are eating unhygienic food, if they are suffering with the yin deficiency or with the blood deficiency, then it's like a glass is half empty. Then wind will rise and they will suffer with that twitching of the eyes. So what you have to do? To expel the wind first, and you have to do the nourishment. So definitely you will use ND point. So right now you can use or like ND3, ND4, ND3A, ND1, all the point of the ND you can do. So we can use magnets also on these points? Yeah, definitely. Yes. Star magnets, right? Because star you can use all the ND meridian and they will definitely work. Okay. Okay, sir. Thank you so much. Yes, Paramjit ji. नमस्ते सर. नमस्ते. हाँ जी
सर लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं P9 और इसके अलावा? वो डिस्कशन आएगा तब उसको वो हम सीआई मेरिडियन में डिस्कस करेंगे, सर्कुलेशन मेरिडियन। ओके सर, जी बिल्कुल। थैंक यू। यस, नम्रता जी। आर यू देयर नम्रता जी? जी सर, सर मैंने ये पूछना था आपसे कि किडनी स्टोन में SP9 काम करेगा? किडनी स्टोन में SP9 भी काम करेगा, लेकिन किडनी स्टोन जो होता है ना, व्हाट इज द किडनी स्टोन? There are two type of kidney stone. One is painful kidney stone. Second, silent kidney stone. Okay. If it is painful, अगर ये किडनी स्टोन पेनफुल है तो आपको ह्यूमिडिटी को निकालना होगा, उसके लिए स्प्लीनाइन काम करेगा, लेकिन हीट को भी निकालना पड़ेगा। You have to add more point. So if you want to go with the protocol will be humid heat in the lower warmer से आपको humid heat को निकालना पड़ेगा, तब जाके किडनी स्टोन पर काम करेगा। And definitely 1 point will be spleen 9 in many group. थैंक यू सर। अगर कोई व्यक्ति spleen 9 को रेगुलर स्टिमुलेट करता है तो स्टोन बनने की टेंडेंसी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि किडनी स्टोन ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया फिर वापस नहीं बनेगा। किडनी स्टोन आप निकाल भी दो तो वापस बन जाता है, लेकिन स्प्लीन 9 एक ऐसा पॉइंट है कि वो किडनी को ताकत देता है और किडनी स्टोन बनने की जो टेंडेंसी उसे कम करता है। यस प्रीति जी। Sir, my BP, no, normally the upper side it comes very high and the lower side it comes low. Like even if it is 180 or something, I'm a BP patient because high BP. So even if come 173, so the lower side it will come 180 only. So it is not very high or 73 or sometime also. So in that like even method like methi seed or something like we have to use or like sedate or what? सो अगर आपका नीचे का बीपी 80 है तो उसे हम लो नहीं बोल सकते, है ना। अगर आपका नीचे का बीपी 70 है उसे भी हम लो नहीं बोल सकते, बट इफ इट इज लेस देन 70 लाइक 65 60 देन कंसीडर इट्स अ लो, तो नॉर्मल कंसीडर करेंगे। अगर आपका ऊपर का बीपी हाई है, इफ योर अपर बीपी इज हाई like 140 150, okay, then we will consider you high BP। लेकिन अगर आपका बीपी मान लो ऊपर का 150 हो गया, नीचे का आपका 70 हो गया, then we can consider this type of BP is happening because of the poor elasticity of the heart की इलास्टिसिटी होती है ना ब्लड को, अगर वो इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो ऐसा होने लगता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका जो जो हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक का काम है बीपी को बढ़ाना, पैरासिम्पैथेटिक काम बीपी को कम करना, दोनों का थोड़ा बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप इवन मेथड करिए आप, इसकी बजाय कि आप सारे पॉइंट्स को, तो इसके लिए हमने जो पॉइंट समझे थे ना, जैसे आपको ND1 ए तो लगाना ही है, ND1 ए तो लगाना है ना, 1A, Okay. क्योंकि ND1A इज द Yeah. SMP पॉइंट, Yeah. क्योंकि ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करेगा, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक को बैलेंस करेगा, कब बीपी बढ़ाना है कितना घटाना है इसको बैलेंस करेगा। देन वी हैव डिस्कस स्टमक 10A फॉर वेगस नर्व, राइट। We can just stimulate those point. we can just gallbladder 20 we can stimulate that, right। Yeah. और इसके अलावा और भी कई पॉइंट होते हैं, लेकिन इतना अभी की जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप इतना स्टिमुलेट कर सकते हैं। यू कैन ऐड पेरिकार्डियम 9 which is very good for arteries, okay। And the second is cramps जो आते हैं ना रात को like veins. It was a vein problem. Cramps suddenly I get up in the middle of the night and cramps comes and then like I have to क्रेम्स आते हैं, start walking and drink water. Then like they have to put dupatta or something. Then got it it, goes. got it। Cramps in the legs or in the multiple part of the body due to the dehydration and calcium deficiency or sometimes some other mineral deficiency, तो आपको अपने अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट करना है। The last one, what you said? Dehydration No, and that is a mental. mineral deficiency, Mineral, okay, yeah, yeah. like especially calcium। Mm-hmm. तो आपको अपने फूड में
वो चीजें बढ़ानी है जिसमें आपके शरीर में मिनरल्स की, आजकल लोग आरओ का पानी ज्यादा पीते हैं ना, तो आरओ के पानी में क्या रहता है ना, उसका पूरा टीडीएस उसका खत्म कर दिया जाता है और मिनरल हमारी बॉडी में जा नहीं पाते, सो वी सफर विद लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. वन ऑफ द प्रॉब्लम इज क्रेम्स. क्रेम्स इज ड्यू टू द डिहाइड्रेशन एंड डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स. And the heartbeat, you already said spleen deficiency. That one person asked the heartbeat problem. So spleen No, deficiency. no, no, Okay. Thank no, you. no, no, no. Never, Then, never okay. tell question in a wrong way. Okay. So. Person told after having meal, I suffer with palpitation. Oh, okay, okay. Sure, sure. I'm Yeah. not telling that heartbeat is because of the spleen problem. Okay, sorry. I was Okay. because my heartbeat like sometime it comes high, so that's why. I think for you, stomach 10A and Mhm. God 20 combination will be very good. Is it that because the arteries like stent are there, I'm on the blood thinner or something because of that, and Yeah, because just in November 24, my this angioplasty was done. no, it's not because of the stent. It's Yeah. because of your autonomic nervous system is not working in balance. Okay. So you have to. That's why I told work with the NT1A, that the SMP point. It will bring balance between sympathetic and parasympathetic, right? Okay. Balance करना है. Yeah. Thank you so much. Yes, बंदा जी. सर वन मोर क्वेश्चन. Yeah. सर कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद किसी को जो है वाटर आता है आंखों में, तो ये भी नर्व की प्रॉब्लम हुई है क्या? इसका हम डिस्कशन करेंगे आंखों में, आई ऑर्बिट मेरिडियन में हम बताएंगे. ओके सर. आंखों की हर प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट उसमें आ जाएगा. ठीक है. आई ऑर्बिट मेरिडियन डॉक्टर बोल रहे हैं जो 9 मेरिडियन दिए हैं, हाँ. उनका जो 9th मेरिडियन है आई ऑर्बिट मेरिडियन. ठीक है, उसमें हम सब बात करें. ठीक. थैंक यू. और आपको बताऊं, आंखों से जो पानी आता है ना, वो उसके कई कारण हो सकते हैं ना. आंखों से पानी आता है जो कैटरेक्ट के बाद, वो एलर्जीज के कारण, इरिटेबिलिटी के कारण, है ना, उसके कई कारण हो सकते हैं. इसके बारे में हम डिस्कस करें. ठीक है. ठीक है सर. गुड नाइट. So thank you so much, everyone. Let's see the next class. Good night. Good night. Recording stopped.